Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-Alaikum. Welcome from softdatain. In today's lecture, we will talk about how to draw a flowchart in MS Word. softdatain की जानिब से आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे MS Word में flowchart बना सकते हैं। And I have one announcement for you that we will upload one lecture on MS Excel 2 once in a week, and we will also start to upload lectures on online earning soon. और मेरे पास आपके लिए एक खबर है कि अब से हम हफ्ते में एक दफ़ा MS Excel के लेक्चर भी अपलोड करेंगे और बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। So let's get it started. This is our program here. Write a program that inputs test score of a student and displays his grade according to the following criteria. Just for example, greater than or equal to 90, the grade will be A, and 80 to 89, the grade will be B, and so on. तो हमारा प्रोग्राम है कि यूज़र से एक वैल्यू ली जाए जो इसके नंबर हो और नीचे दिए गए क्राइटेरिया की मदद से उसका ग्रेड बताया जाए। Basically, it's a gradation program. We have to set marks as grade. As the student of IT can easily understand this coding, but I'll revise it for you. IT के स्टूडेंट इस कोडिंग को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए इसे एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं। हर कंडीशन के सिर्फ दो ही जवाब होते हैं, हाँ और ना। अगर पहली कंडीशन ठीक होगी तो इससे नीचे वाली कमांड आउटपुट में आएगी, वरना कंपाइलर अगली कंडीशन की तरफ चला जाएगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जब तक सारी कंडीशंस ना गलत हो जाएं। जब सारी कंडीशंस गलत हो जाएंगी तो एल्स वाली कमांड आउटपुट में आएगी। ओके, आई अप्लाइड सम कंडीशंस हियर। एवरी कंडीशन हैज टू पॉसिबल आंसर्स, yes or no. If first condition is true, then the following line of grade A will show as output. Otherwise, compiler will move to next condition and keep on looking all conditions until they all would be false. If false, then compiler will run its else command of grading F. Now let's draw flowchart. आए flowchart बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही पेज की सेटिंग कर रखी है, अगर आपको नहीं पता इस सेटिंग का तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। As I already set the basic settings of the page, so if you don't know about basic settings, you can watch other video. The link is given in description. So click on insert, then click on shape. Insert पर क्लिक करने के बाद shapes पर क्लिक करें। Here you can see this is a section for flowchart shapes. आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अलहदा हिस्सा फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली शेप्स का बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज स्टार्ट शेप एज एवरी फ्लो चार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो अब हमने इस शेप को चुन लिया है क्योंकि हर फ्लो चार्ट इसी शेप से शुरू होता है। राइट क्लिक ऑन इट एंड देन ऐड टेक्स्ट। To those of you who don't know how to modify text, you can watch our other video. The link is given in description. जिन लोगों को नहीं पता कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं, वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे मौजूद है। Now let's draw input and output shape. अब हम इनपुट और आउटपुट शेप ड्रा करेंगे। Write input score. Now we have four conditions here, so let's draw condition operator. हमारे पास चार conditions हैं, तो हम एक condition operator draw करके बाकी copy और paste कर लेते हैं। Now let's copy and paste it 3 times. Again select input and output operator and copy it for pasting 4 times. इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को ड्रा करने के बाद 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करना है।
Now I am rearranging the positions of input and output operator. तो अब मैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स को उनकी जगह पर रखकर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फ्लो चार्ट का। So as you can see our basic structure is ready now। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लो चार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। Now adding conditions in conditional operator। अब हम condition operator में condition लगा रहे हैं। Okay, let's write grades as output. For first condition, grade will be A and so on। तो अब हम आउटपुट ऑपरेटर के अंदर जल्दी से ग्रेड लिख लेते हैं। इस आखिरी वाले में F आएगा क्योंकि हमारी कोई कंडीशन दुरुस्त नहीं होगी तो सिर्फ यही आउटपुट होगी। Okay, now let's match the shapes with arrow lines। अब हम arrow lines की मदद से इन खाकों को आपस में जोड़ेंगे। To connect two arrow lines with each other, we use connector here। दो या दो से ज़ायद arrow lines को जोड़ने के लिए हम connector का इस्तेमाल करते हैं। Now insert a text box to write yes or no as a path shown by conditional operator। हमारी कंडीशन अगर सही है या गलत इसके नताइज तक पहुंचने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर इसमें yes और no लिखेंगे। If our condition is true, then grade B as output will shown if
wrong, we will move to next condition. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रेड बी आएगा, वरना अगली कंडीशन की तरफ जाएगा. लेट्स मॉडिफाई आवर टेक्स्ट को खूबसूरत बना लेते हैं. Okay, our video is going to end. I would like to announce something that from now on our video would be in English only. अब से हमारी सारी वीडियोस सिर्फ इंग्लिश में आएंगी. So if you have any problem, you can contact with us at our social platforms. Thanks. तो अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप हमारी सोशल साइट्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं. Take care of your friends, family and relatives. Thank you. Allah Hafiz.